Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Good afternoon to one and all. Resource person for this afternoon session, Dr. Rajesh Jawlekar sir has joined our cloud meeting. So on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, I welcome Dr. Rajesh Jawlekar sir. He will speak on skill on and competency development and students with special reference to OJT and internship to NEP 2020. Dr. Rajesh Jawlekar sir, currently Director Innovation Incubation and Linkages, uh, KBC North Maharashtra University, Jalgaon. His academic qualification is BSc, MBA, LLB, PhD. Total 29 years of professional experience, out of which 27 years in industry. From 1994 to 2022, worked with the organization like Johnson and Johnson, MCED, Mycoseeds, CK Birla Group, and Endurance Technology. Since last 2 years, he is associated with North Maharashtra University, Jalgaon. His contribution in academics includes conducting regular classes at FDP at UGC Center BAMU, also leading the Center for Innovation and Incubation in North Maharashtra University, Jalgaon, then member Senate level OGT internship subcommittee, then member Maharashtra State Responsible Research and Innovation, then task for MSRRIT facility. राफी सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में आई एम नॉट एबल टू हियर हेलो हेलो am I audible? I'm not able to hear any one of you. Okay, great. Yeah, so I think let's come to the session. Good afternoon, everyone. In fact, what we'll do is I think at the end of the session, we'll have the question answers. At the outset, I'm thankful to the center for giving me this opportunity to present my ideas before you, especially on internships and OJT. So basically, what I've done is today my presentation I have divided into two parts. So on basically, I'll be talking to you on what are the competencies that one looks at when, especially when we work in industry. Like for example, when we are since with my industrial experience, I'll be sharing with you like what typically we look at when we in industry, what we look at from a student, and what is ADP all about. So if the moment I am not audible, I would request you to please raise your hand and let me know so that I can immediately align myself, because I think you all have been muted by the organizer. Yeah, 1 second. Just try to. Wait a minute.
Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Great. Sure. So let's make a beginning. As I said, I'll be more discussing on the the skills and competencies development, and especially with reference to NEP 2020 also, and nevertheless in context of the industry. See, I would say I was very fortunate that I have worked in industry for almost 28 years. And after this, then owing to my own passion, and since I was interested in academics, I've joined KBC NMU Jalgaon as a director. So when you look at what I've done is I have divided my presentation in looking into what is the current market scenario. Market में क्या चल रहा है? What's happening in the market. And trust me, when I was preparing for this presentation, I looked for the latest news also, which I'll be sharing with you in my presentation. Then the future and the forward path. How do we talk about the competencies and how do we develop those competencies of the students? So let's look at the first part, the current market scenario in the introduction. So here it is. The current market scenario. See, typically when we talk about business strategies. So for example, I won't say about the youngsters, those who are quite young, maybe below 35 or 40, but my colleagues who are in the age group of 50 plus, they'll know that how the period was in 1980s or 1990s and 2000, how it has been gone through. I would say this generation, those who are in 50s and 60s, are the blessed ones, those who could see all these turbulent changes during during their lifetime. Like for example, if I look at we have seen how the technology has been changing, you know. So in terms of market, when I look at the business, market. So I think what you can do is, since you have been muted, most of you, the participants, you can text me. See, are you able to see the slide? On this slide, what is your observation on the slide? How is the 1980 scenario? Probably, one or two can just put their comments, which I will try to, read over here. If you can just text your comments. What are you observing on this slide? I would like to keep it more of interactive, because otherwise also when you're conducting an online session, it is quite challenging even for the speaker also to keep, understand how the participants are taking it. So what are your observations like on this slide? What are you seeing? Okay, here I'm seeing some comments. So any comments on the current slide? Like, what is your observation? Maybe one or two can just respond. As we all are faculty members, you know that we all need motivation. So it should not be happening like, I'm just talking and then nobody, I don't know. So can anyone comment? What are you seeing in the two students and no books? Okay. Well, I'm talking about this. Okay. See, this is a buyer and seller. If you see on the screen, it is written as buyers and sellers. So what is the key observation that you have? Well, I would like to without taking much of time, because we need to move ahead also. So if you see here, how many buyers are there? Can anyone type so that I know you are attentive? Hello. How many buyers you are seeing?
Yeah. How many buyers you're able to see on the screen? Correct. So we all are buyers. Okay. Uh, Ashaji, I'm just trying to, mention here that basically, if you see this market, there were two buyers and one seller. What does this mean? What was this 1980s Raj? This 1980s, it was more of a licenses Raj. In the sense, uh, I still remember when we wanted to purchase, yes, oligopoly. So when we wanted to purchase a two-wheeler, the waiting period was five years. And today, what's happening? Today, you just go into the market and immediately you'll get the delivery. So what happened? What next? If you see how the 1990s scenario has changed, we all know, I will not repeat the story, LPG concept, liberalization, privatization, and globalization by our honorable, that time Finance Minister Sri Manmohan Singh ji, wherein all the license Raj had vanished. And because of liberalization, privatization, and globalization, the market it became a global market. So the Indian market was open to go global manufacturers also. They came into India. There was a lot of collaborations which happened, and there was a boom in economy. Today, what we are seeing today, the Indian economy is the blessing of 1990s LPG effect. It created a lot of opportunities. So what is the difference in this? If you see here, the buyers are less and the sellers are many. So this is how the market has changed now. As I said, probably in 80s, when we wanted to buy some product, I still remember when we were constructing our house, and to get a cement bag, we had to go to the Tehsil office and book our cement bags. And we were allotted, there was a rationing. There was some quota which was being allotted. Probably those who are in their 30s and 40s may not, cannot also imagine of this. So this is how the market has changed. The seller has become more, the sellers has increased. And owing to this, what has happened? There's a huge and fierce competition. And because of this competition, there's a performance pressure on the industry. And now today, what we see in 2000, if you look at the current market, how is the picture 2000 and above? Probably uncertainty is the only certainty. We are today not aware what's going to happen next. It's scary picture. Let me share with you. Today we have seen the event of AI, artificial intelligence, how it is going to, till yesterday we were talking about the chat GPT, an open AI tool, which most of you must be aware of. But suddenly, maybe last about 15, 20 days ago, or maybe since last 1 month or so, there's a big talk about DeepSeek, the Chinese AI, which is probably better than chat GPT. So what's happening is it is becoming a it is becoming what we say we call it as a disruptive technologies. I'm using the word disruptive because what happens when one technology comes, the other becomes obsolete. If you see our mobile phones, and way back in 1990s, there were pagers which were being used for paging text messages. So having those small pagers also was a big, a status symbol kind of. Like, people used to read the messages on the text messages, but as soon as mobile phones became popular in the initial days, I remember I think it was around 15 rupees, 10 rupees plus for a minute call.
And calling on mobile and receiving a call also on mobile was chargeable, almost 10 to 15 rupees per minute. And today, what's happening? It's almost national roaming is free. So what's happening is what I'm trying to say, these are disruptive technologies. The technology, when it develops, it yeah. So in 70s and 90s, it became more of an industrial relations, Raj. If you typically look at, if you have seen some old movies, you will find there's lot of there is a lot of agitation which happens between the owner, the so-called board of directors and the unions. And you'll see the union dharnas which are happening on on the gate. And there are a lot of slogans, there's a lot of fight, which happens between the union. There is a lot of militancy, I would say, in the union. But are you seeing that today? Probably maybe in last 15, 20 years, have you heard about any big strike which is happening? And there is a big, a crowd which is outside any industries? Probably no, because this has also changed over a period of time. I will come and share with you at an appropriate time how things are changing. I'm just trying to take you to the current reality. Like probably, 20, 30 years ago, what I was teaching, like I'm talking in your context, may not have even remained the same. So that is how we need to align, and that is how our structure is also undergoing a lot of changes. And 1920s and 90s, what is happening in the current context? I call it as an employee Raj. Have you heard? See, one side we are talking about an unemployment, but have you heard that? Sorry, have you heard that, the private sector says that we are not getting the right people? Many a times, the private sector people, let me share with you, my last stint was with the Endurance Group. Its turnover is around 10,000 crores. We used to sit in our head office, and the challenge in front of us was getting the right people. So there was a scarcity of talent, and it is happening almost everywhere. So these crises means today, one side we are saying that there is unemployment, the other side we are saying there is a crunch of availability of talent. Do you all agree with me? Somebody, let me see if you're online. Yes, good. So I could see the comments also. So just hold for a while.
Just hold on. I'm technically facing some issues. Just hold on. Yeah. So, as I said, people used to say that, okay, there's a scarcity of talent. We'll come to that. I'll show you on with the latest news also. So what's happening? It's a change. The only constant, as I said, is the change. The people who change have sustained. In this uncertainty world, if you don't change, then probably it's a question of our survival. As I said, the studies indicate that low availability of talent as the biggest constraint for the growth of companies in India. 15 to 20% shortage of middle level managers out of 2.2 million graduates. International companies and salaries in India were the fastest growing in the world. With the recent recession, there has been a slight break in the same. What I'm trying to say is that as I was sharing my experience with you, when we were I was based out of Chhatrapati Sambhajinagar, and the industry that I was working was with a 10,000 crores company. It was very challenging for us to attract the talented people from, like people used to say, oh, why do I move from Pune or Mumbai or Bangalore to Aurangabad or the current Chhatrapati Sambhajinagar? How is the schooling over there? Literally, it was challenging for us. We used to help them, settle down also. Today also, when I'm in Jalgaon, but today let me share with you, when I interact with my industry colleagues, they say life is very, slow in Jalgaon. If my family moves over here, there is no a big shopping complex over here. The typical like malls that you have. So what I'm trying to tell you for attracting the talent. So basically, as I said, today we are talking about employee Raj. Having the right person is a big challenge. Let's look at some of the recent, yeah, the the Times of India. If you look at this is probably the news in October 29, 2024, that means few months ago. Only 10% are expected to secure jobs if you see out of the pass out. See, these are the realities. Similarly, if you look at the Hindu, only 51% of the graduates probably are employable. It is a very scary picture. One side we talk about improving our GRE, the challenge as we are into education, we talk about how do we improve the GRE, how do we have more and more people getting enrolled for higher studies.
But at the same time, those who are getting passed out, probably what is their employability? Are they employable? As good as this, I think, is of February 24, 2025. I just tried to, when I was preparing for these sessions, I was doing some of my research. I was just trying to find out, what are the latest news. And when I was trying to find out, I happened to come across this news, which is just 2 days before by the Economic Times Education Series. And this is none other from our, Chancellor himself. If you see, the news says this means that I've underlined it. Nearly 90% of the graduates are deemed as unemployable. So what I'm trying to say, we are living in this world of challenging world. So now when we talk in current context, अब ये challenges तो रहेंगे अपने पास. These challenges, as I said, we have to face these challenges. We cannot run away from it. So what are the changes which are happening in probably in our education system is internships, OGT has been introduced. I'm sure it is just the second year for the PG students now. And probably I think the undergrad who have been enrolled now they'll come for internships in next year probably. In the current, most of us who are running the PG courses and the students who are in second semester, probably they'll be having the internships now. So what does our NEP 2020, the National Education Policy 2020 say? Towards developing the capability and competence of the students. If I read that from the UGC guidelines, I've just tried to pick up, like as I said, for this session, the National Education Policy 2020 views that the purpose of education system is to develop good human beings, being capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination with a sound ethical mornings and values. And that is how we are seeing that how the structure is changing. We are having value-based education. And this is how the internship, with the intent that let us give a practical exposure to the students. But again, here I would like to mention, since I was in industry, uh, let me share with you, it was a very painful situation, because even the students, those who used to come at times, I'm talking this maybe 3, 4 years ago, when before even the NEP had come in place, even before 2020s also. The student used to come. Out of that, many of them were just interested for the sake of doing the certificate, getting the certificate of internship completions. I was surprised, simple formulas which were asked to an engineer, they were not able to answer those formulas during the interviews. And with the intent, the object of government of India is that how do we make our students employable? How do we give them the exposure of, through internships? How do we build their capability? How do we build the competence of the students? And with that objective, probably this internship, OJT, has been introduced. So let's look at the future. What is the future? See, typically when I talk to many of the students, when I ask them, what are your objectives? Where do you see your 5 years down the line? What you would like to do? Probably most of the times they will say that it's a job milna hai. There's nothing wrong. But then we always probe on them that it's not just a job that you're working for, that you're studying for, but probably you need to look at, are you studying for a job or a career? And let me share with you, friends, there's a huge difference between a job and a career. So if you look at you, and we need to percolate this down to our students.
especially when you go back from these FDPs, and yeah, I'm sure you'll be having a lot of other technical subjects. But at the end of the day, you need to make them aware that yes, are you studying? It's just for a job. Of course, some would be interested in innovation and entrepreneurship. Typically in Maharashtra, we find a lot of less people, very few, maybe hardly 1% or 2% will move towards, creativity, starting of their own business and things like that. That is the reason why the Center for Innovation Incubation Centers have come in the most of the campuses, where we would like to also promote entrepreneurship and innovation and entrepreneurship amongst the students. But those who are looking for careers, probably they need to understand what is the difference between a job and a career. What is the attitude of a job seeker? A job seeker attitude is typically, it will say, work as much your worth. Is my PPT visible? Just in between, I'm asking all of you so that I know that we are on the same page. Great. Thank you, Vijay. Thanks, Vijay. So when we look at this, म्हणजे आपण म्हणतो ना, जेवढं मिळेल, म्हणजे जेवढा पगार आहे, मी कशाला जास्तीचं हे करू. I'm sure this mindset happens everywhere. It's not just the industry, but it happens over here also. Why should I take additional responsibility? It happens. So that's a job, job orientation. Typically, when we used to, like we, in our industrial language, we call it as, what we call it? In our industrial language, we call it as a two punch and one lunch mindset. And you know what is this two punch and one lunch? मॉर्निंग आने का, बायोमेट्रिक करने का, दोपहर में लंच करने का, एंड आफ्टरनून का पंच करने का. In the sense, post after duty. So this, let me share with you, industry is facing with these challenges also. Because they are looking, and that is why there are a lot of psychometric assessments. There is a lot of, assessment tools, assessment development centers. These different kind of tools are used because it is not just the technical knowledge which is important, but along with the technical knowledge, the behavioral knowledge, the attitude is also equally important. Let me share with you, when we talk about leadership positions, we look at their capabilities. Like you must have seen in industry, there's a guy who's a diploma engineer, but he becomes a factory head. Because there the qualification or tenure of service is not important. What you're contributing is very important. And when you look at these, the so-called diploma engineers also, I used to see we had around 29 plants which were spread across across the country, the group where I was working. And couple of plants, we had diploma engineers who were heading those plants as plant heads. And probably below them, there were MTechs and PhDs and so called, different groups of, qualification, people with high qualification. So this means that is the qualification only enough? Probably no. It's not just the qualification, but you also need to look at the personality aspects of the people, of the leadership positions. And that is what we are trying to inculcate through our internships and through our OGT in our students. How do they think critically different? How do we improve their thinking ability? How do we make them more, questioning, asking, why? Instead of just mugging up and appearing for the exam. Unfortunately, till now, till almost till 2020s, whatever education system that we have gone through, I'm not saying it was bad, but it was more towards exam centric. We all know. Because now with my also daughter who is studying in 10th standard, I always tell her, beta, at the end of the day, what matters is how much you score. So as a parent also, our mindset is always that what score you get in the exam. I'm saying the score is important.
but I'm not sure whether she'll succeed in life with just the score. You must have seen in your classroom, a lot of your backbenchers, probably we all were good at our studies. So we have completed our PhDs, we have completed our, higher education. We have done very well. And today we are into the noble profession of teaching. But you'll see a lot of our backbenchers, probably those who are not that good in studies, but today they are running some industries, they are doing some business. So what makes them different? It is probably their capability, their competence, their critical thinking, their decision-making skills. So our education system also, we talk about like, how do we improve these decision-making skills? How do we improve these kind of skills amongst the younger generation? And that is through your real life projects or through your internships, OJTs. So when you look at typical the other characteristics of an attitude of a job seeker, no learning and development. There's a lack of knowledge and skills. Because these guys, those who are working with a job attitude, they never try to learn. Because they feel, okay, job mil gaya, bas. Now everything is done. But let me share with you, then these are the people in industry, they don't grow in life. They have joined as engineers, they'll remain engineers for years and years together. Probably in some, time, then they'll become supervisors, they may become supervisors, they may become, assistant managers, but the career growth is very, very slow because they don't adapt, they don't acquire the new knowledge which is required. When we are looking at these job seeker attitude, let's look at what are the career seeker attitudes. A doer attitude, as I said, a job seeker attitude is always a doer attitude. Why should I do? If what happens if I fail? That kind of attitude is there. अरे मी नापास झालो तर काय म्हणजे दिलेलं काम साहेबांनी दिलेलं काम जर मला नाही करता आलं तर विनाकारण मला शिवाय बसतील मला साहेब माझा त्रागा करतील त्यापेक्षा न केलेलं बरं. Am I going to get more salary for that? No. So why should I? So it's better to have a clerical attitude and just do a doer attitude and continue doing the work. So these kind of attributes are there typically about the job seeker. Fear of failure, as I said, what happens if I fail? And in this thing, they don't take up any risk. And when they don't take up any risk, typically they don't grow in life. Now let us look at what is what is a career oriented person. What is the difference in that career oriented person? Typically, when you look at the career oriented person, you will find that he works with a passion. Career oriented person will always look at like passion म्हणजे आपण जे म्हणतो ना fire in the belly. You must have seen even in your setup, in our setup that we are working, you must have seen many times when there is a special project comes. So एक टीम ठरलेली असते. ठरलेली म्हणजे you have already shortlisted some of them, or you want to give some task, you'll always give that a special task that you need to do amongst your students, maybe 30, 40, 50 students, whichever you have. There'll be some students you will shortlist for doing the task because you find that they have that inclination, they have the zeal. And that is what, the career, when you look at a career, so the people, the students who really work with that passion,
they can probably develop their career. केवळ आयटी मध्ये जास्ती पगार मिळतो, आयटी मध्ये जास्ती पगार मिळतो, आयटी मध्ये खूप लवकर नोकऱ्या लागतात. नोकरी लागते, यु नो. म्हणून मला आयटी शिकायचं, म्हणजे मला काही आयटी मध्ये इंटरेस्ट नाहीये. मग तो व्यक्ती कदाचित त्या मुलाला किंवा मुलीला सुरुवातीला आयटी मध्ये नोकरी लागेल, पण ती ग्रोथ होईल का? कदाचित नाही होणार. ज्या दिवशी एआय सारखा एखादा टूल आला तर काय होणार? त्यांचे जॉब्स निघून जाणार. आणि जो करिअर ओरिएंटेड मुलगा किंवा मुलगी त्या याच्या आयटी मध्ये क्षेत्रामध्ये आलेले आहेत, त्या कोणत्याही क्षेत्रात आलेले आहेत, विच एव्हर फील्ड. आय होप मराठी इज ओके विथ ऑल ऑफ यू, और शुड आई स्विच टू कीप हिंदी ऑल्सो? इट्स माय ड्युटी टू चेक, अदरवाइज देन आय जस्ट ओके. तर सांगायचं तात्पर्य हे की बऱ्याचदा, लाईक as I said, a student, just because there are lot of plenty of jobs in IT, आणि म्हणून मग ते आयटी क्षेत्र निवडलं. तुम्ही पाहिलं गल्लोगल्लीमध्ये कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट्स. ओके, हिंदी हिंदी ओके, आई कीप इट टू हिंदी. सो हम लोग देखते हैं कई बार कि केवल एक क्षेत्र में बूम होने की वजह से क्या होता है कि उस दिशा में काफी लोग जाना, स्टूडेंट, वो स्वाभाविक है. स्वाभाविक है कि काफी बच्चे जो है, बिकॉज अल्टीमेटली उनको उनके पैरों पे खड़ा होना है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट वी एज टीचर्स, वी नीड टू टेल देम दैट लुक गाइस, just don't take this as a career your education option. Look at with that passion. Look at it as a career. Because if you work, if you study with that passion, then only probably you will be able to sustain into the market. Let me share with you, AI has taken away a lot of jobs of small mini programmers. AI has taken jobs of lot of translators. There are so many things which are happening. So as I said, these are disruptive technologies. These are things are going to happen. So the student who works with a passion is probably the person who is more of a career mindset. As I said, he or she acquires the desired knowledge and skill. They keep themselves updated. Today also, let's look at our industry. See, today, if I'm talking in front of you and if I don't give you about the latest examples which are happening, like as I said 2 days before, what was the news? If I don't make use of technology, will I be effective? Probably no. So we need to acquire, update ourselves, and probably these faculty development programs are also happening in the same context. It's not just the paper, the certificate that I'm going to get. Okay, that certificate may help me in my career growth. But more than that, I'm looking at this, as I said, the moment I get an opportunity for speaking in front of you, I always take this opportunity because that helps me to go back and learn, do some research. Abhi kya chal raha hai, kind of. And that helps me to share my experiences. So what happens? I can share experiences provided I prepare myself. Will I prepare otherwise? No, I will not prepare. So when such type of sessions, I look at it as an opportunity for my own development. So we need to, the students who are actually looking at career as an option, they will always try to pick up those knowledge and skills and they will stay updated. And that is why you must have seen in IT, again, I'll give some example of IT only. You'll see a lot of people sit on the bench. They call it as a bench. Bench, बाकड़ा. म्हणजे बाकड्यावर बसवतात. बाकड़े पे बिठाते हैं लोगों को. बाकड़े पे बिठाते हैं इन द सेंस उसके पास कोई काम नहीं है तो उनका एक पीरियड होता है.
3 महीने के ऊपर बाकी के ऊपर नहीं बिठाएगी। 3 महीने के ऊपर अगर कोई बेंच पे है तो उसको वो घर का रास्ता बताएंगे, यानी पिंक स्लिप जिसको बोलते हैं। The person needs to acquire with the new skills. He needs to continuously be on the toes. And let me share with you, this is not only happening in education. Those who are chartered accountants, for them, now I think it has become mandatory that they have
Sir, you are the co-host, sir. Correct. Okay. Now, I was trying to unmute, but I was not able to unmute. Yes, sir. So participant are restricted to some participant open the mic and disturbance in creating disturbance. Okay, fine. So let's continue. Yes. Yeah. So once again, just let me share my presentation. So is the screen visible? Yes, sir. Yes. Great. So, so what I was saying is, like, as you know, the person who, works with the career attitude, in the initial days, there's a thirst of learning and I learn. So he tries to make more of a practice. Throughout the career, it's continuous learning for him. So he tries to acquire more and more skills. He does not stop at one place and developing the competence. So this is what the person with a career attitude. Now let's move ahead and see how the things are changing. As you see, loyalty is changing to commitment. See, if you see the old times, you'll find your parents or maybe your senior people who are there, who have been working in industry also. They'll work for almost 10 years, 15 years, maybe their entire life in a company, in a given company. But today what happens? Even if they work for 2 years, 3 years, the younger population change. So this is how the market is shifting from loyalty to commitment, from seniority to meritocracy. So it's not a time bound, it's meritocracy, which through which they make a excellence in career. Instead of social fairness, it is more of a contribution fairness. You will see there are engineers who are working with maybe, with 20,000 rupees salary, and you'll also find engineers who are working with 50,000 rupees of salary. So probably the salaries and the CTCs depend on, like, what they are able to contribute. And companies use different techniques to retain the talent. So evolution of talent management, I would just like to come to what is the old reality. Old reality अशी होती कि people need companies. Today companies need people. Let me share with you. Companies need people. We need the right people. Machines and capitals and geography are competitive advantage. Today talented people are competitive advantage. If a company has a talented people, probably that company is able to grow. Jobs are secure. Talented people are scarce. Employees are loyal and jobs are secure. People are mobile and their commitment is short term. In reality, people are mobile. People will move out within 2 years, 3 years, maybe. Employers define the rewards. The rewards are customized to people's needs, and employees are demanding greater flexibility. Typically, let me share with you most of our company. I'll share in terms of compensation. When we were working in industry, the compensation is, let us say, 1 crore rupees for a very senior vice president or so. But out of that 1 crore rupees, maybe 40 lakhs, that is 40% of his salary, is linked to the profitability of the company. So it's a variable pay. So these kind of structures are being worked out. So these are the realities of life. And even at a junior level, the salaries which are offered, like, 8 lakh, 10 lakhs, whatever annual packages, maybe 10 to 20%. So higher you go,
higher is the variable pay. So assistant manager, deputy manager, they'll be having maybe 5 to 10%. But if you talk at a president level or a very senior level, the salary, the variable pay may be 30 to 40%. That is because of the performance. You perform and you pay, you earn the salary. So what is the forward path? Now, after understanding all these complexities and challenges of what industries are facing, so what are the current forward path? See, why some people are more successful? So there was a lot of study which was done. Of course, David McClelland also, conducted some article in 1973 testing then competence rather than intelligence. So, they talked about more of competency. This word started becoming popular. So what are the competencies? The competencies are nothing, but typically if you look at, what Spencer and Spencer says, competency is an underlying behavior or characteristics of a person which leads to a superior, performance. Here I'll give you it says an underlying behavior. Means it typically, if you look at this model, probably it will help you to understand. If you look at this model, so what does this model say? The model says that, it's an iceberg model. An iceberg model is nothing but like, Himakaya Parvat, jo Barfacha Parvat Titanic movie, if you remember. So two-third of the iceberg is below the seawater, and maybe only one-third is visible. So what we are seeing today, when we try to assess, like for example, the students who have scored very good marks, that is probably the knowledge that we are looking at, means which are visible to us, skills which are visible to us. So it talks about the one-third are the observable behavior which is visible by our eyes. But what is the competency? It talks about the two-third hidden portion. The competency talks about the self-concept, attitudes and traits and motives of that person, which lead to superior performance. I'll just give a small example over here, which will help you to understand. We'll take a hypothetical example. Let's take a hypothetical example where, you have, let us say, there are twins. I'm using the word twins because they are born to same parents. It's a hypothetical example. Let us say, Ajay and Vijay, these are two brothers, Ajay and Vijay. They are twins. That means they are born to the same parents. Their age is also same. And it so happened that Ajay and Vijay were put in a school, same class. Hypothetically, they were scoring the same marks in all the same subjects that they were studying. And it so happened that after scoring, they also completed the engineering. And after completing the engineering from the same school and the engineering college, hypothetically, they have scored the same marks in all the same subjects. Both join one company, and in this company, when they join, Ajay is given one production line, and similar on the shop floor, there are many lines, 4 or 5 same lines, similar kind of production which is happening. Ajay is given the responsibility of one line, and Vijay is given the responsibility of other line. Now, 1 year later, when the annual performance appraisal is done, will the success of Ajay and Vijay, the performance, be the same? My question to all of you. परफॉर्मेंस सरीका रहेगा क्या दोनों का? तरीका रहेगा क्या? काशीनाथ जी तुम्हीच उत्तर द्या. बर. नो. क्यों? वाय? क्यों नहीं परफॉर्मेंस तरीका रहेगा? अरे, they are having the same marks.
they are from the same school. हर एक सब्जेक्ट वाइज सेम सब्जेक्ट्स सेम मार्क्स है, एक मार्क भी किसी को कम या ज्यादा नहीं है। दोनों का स्कूलिंग एक ही जगह से हुआ है, दोनों का शिक्षा इंजीनियरिंग की भी एक ही जगह से हुई है। फिर उनके परफॉर्मेंस में बदलाव क्यों? क्यों उनका परफॉर्मेंस सेम नहीं है? क्यों का जवाब मुझे चाहिए, एक या दो लाइन में बताइए। Their attitudes are different. Correct. Amit, you have said it. Their attitudes, beliefs may be different. And that is what, that two-third. एक बंदा है अभी, I'll give that example also. There's one example. So क्या हो जाता है कि नहीं, एफर्ट्स तो ठीक है, एफर्ट्स आर अगेन I won't say efforts is again something, his efforts are is the end. Why the efforts are there? Why more efforts are there? Because of the attitude and the self-concept and the motives, the passion. So effort is the end result that he is trying to hit, putting those efforts. But why is putting those efforts? So so it is the attitudes, the self-concept and the motives which make the difference. So our role is to see that how do we develop not just the skills and the knowledge, but the competence also of the student. I always tell the students, let me share with you. I always tell the students one thing. See, the problem is with this generation is, especially the younger generation, and not only the younger generation, with all of us also. This, our mobile is our idiot box, which is easily accessible to all of us, and obviously the students also. And the students feel that okay, the entire information is there, the knowledge is there, and I always tell them that guys, look, this mobile is just an information. वो समंदर है information का, but it is not the knowledge. Because knowledge and wisdom you will gain through only your interactions, only by interacting in the classroom, by attending the classroom, by implementing what you have learned. Anyway, coming to next, what is the hierarchy? If you look at, see, basically, how do we develop the competencies? हम लोग competency कैसे develop कर सकते हैं? Competency, how do we develop? तो क्या होता है कि resources, we need the right resources. The resources could be teachers, the resources could be some materialistic, things. Then the resources will lead to development of capabilities. रिसोर्सेस अच्छे मिलने से क्या होता है, अगर उसके ऊपर हम लोग काम करते रहे तो क्या होगा, हम केपेबल, जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो साइकिल होना चाहिए सीखने के लिए। साइकिल होने के बाद फिर हम लोग उसको कोशिश करते हैं, तो हम लोग हमारी कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। और कैपेबिलिटी डेवलप करने के बाद हमारा क्या करते हैं, हम लोग कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप करते हैं। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस हम लोग वो एक्सेलेंस पाते हैं उसके ऊपर, और एक्सेलेंस करके उसका फिर हम लोग कोर कॉम्पिटेंस बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ हम लोग जब देहातों में हमने देखा होगा, वो रस्सी के ऊपर भी सायकल चला के, जे आपण डोंगराचा खेळ म्हणतो किंवा आपण खेड्यापाड्याने बरेच आपल्या प्रदर्शनात याच्यात पाहिलं असेल की वो डोर के ऊपर से भी साइकिल चलाते हैं, यानी वो उसका कॉम्पिटेंस, या फिर कोई पहाड़ों में साइकिल चलाता है, वो कोर कॉम्पिटेंस डेवलप करता है। तो इस तरह क्या होता है कि बंदे क्या करते हैं, अपना काम में निपुण होने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं, और वो एटीट्यूड की वजह से वो क्या होता है, अपना एक कॉम्पिटेंसी, एक अपनी वेगळी ओळख, एक अपनी अलग से पहचान वो करके देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने भी देखा होगा कि, और वो जो होता है ना कैपेबिलिटी, इफ यू लुक अराउंड, कई बार हम लोग हमारे, या कई बार हमें भी कभी कभी दिक्कत होती है और हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे वो मित्र को फोन करते हैं। हमारा कोई खास मित्र होता है, उसको हम लोग फोन करते हैं, बिकॉज वो अपने को मालूम है वो सोल्यूशन देने वाला है मेरे को। बिकॉज उसका डिसे वो उसका कैपेबिलिटी उसने कैसे डेवलप किया, बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर ये।
तो इस तरह से क्या होता है कि कॉम्पिटेंस यू डेवलप owing to ये. And let me share with you one more thing that when we talk about this, इसका वैल्यू जो है, उसका वैल्यू क्या होता है, वो इंक्रीज होते जाता है दिन ब दिन. जैसे जैसे आपकी रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं है, उसके कैपेबिलिटी जैसे आप पाते हो तो उसका वैल्यू आगे बढ़ जाती है. कॉम्पिटेंस बनाते हो तो और उसकी वैल्यू आगे बढ़ जाती है. और कोर कॉम्पिटेंसी, तो उसमें क्या होता है, और भी आपका वैल्यू उसकी बढ़ जाती है. तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि बीइंग एन इंजीनियर इज जस्ट द इनिशियल एंट्री, बट वो इंजीनियर को उसके करियर ग्रोथ में ग्रोथ जब भी मिलती है जब उसके कॉम्पिटेंसीज वो डेवलप करता है. तो आगे हम लोग देखते हैं. सो व्हाट आर द थ्री पीस टू सस्टेन? इट इज परसेवरेंस, पैशन एंड प्राइड. We say passionate perseverance, persistent pride, and pride with wisdom. If the students work with this, probably, then they will, they'll be able to develop their competencies. Further, when we are developing the competencies, typically I give an example of PDCA. See, these are not, again, let me share with you, these are not my uh, findings. These I have just picked up from my industry experience and how do we train the people in industry also. As I said, this challenge is always there in front of the industry also, because see, no industry will like to get a vice president from outside other industry. They will always look at हमारे टीम में हम किसको ऊपर ला सकते हैं, हम उसका कॉम्पिटेंस हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं. ऑफकोर्स देर आज का सत्र वो नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बट आई विल पिक अप some of the points. Like for example, I have picked up the Deming cycle, PDCA. And let me share with you this Deming cycle. If you do PDCA, आप अगर गूगल करोगे तो आपके इसके ऊपर काफी सारे राइट अप्स और ये वो मिलेंगे. पीडीसीए क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट. This is one of the 7QC tools which is used by industry to improve and develop the competence. यानी प्लान डू, यानी प्लान करो, कार्य करो, चेक करो कहाँ पे गलत हो गए, फिर उसके ऊपर एक्ट करो, यानी फिर से उसके ऊपर काम करो, फिर वापस प्लान करो, वापस कार्य करो, वापस चेक करो, फिर उसके ऊपर कार्य करो. और इस साइकिल को बोलते हैं पीडीसीए साइकिल. पीडीसीए साइकिल को डेमिंग साइकिल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेमिंग साइकिल. आई एम नॉट वेरी श्योर how many of you are aware, but I'll just share with you that जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हो गया था, जापान पूरा बेचिराग हो गया था बिकॉज ऑफ द एटम बॉम्ब अटैक्स. द वर्ल्ड हैज सीन द डिजास्टर. ऑलमोस्ट जापान इस धरती के इससे मिट गया था, दुनिया से. और मुझे अभी भी याद है बचपन में जब मैं छोटा था, करीब 8-10 साल का, 12 साल का था, और हम लोग जब पेंसिल और शार्पनर की बात करते थे तो हम लोग स्कूल में बात करते थे मेड इन जर्मनी. यानी जर्मनी का बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्रियलाइजेशन में. हम सबको मालूम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, फिर बाद में इंडस्ट्री, आज भी प्रिंटिंग ये वो काफी जर्मन प्रोडक्ट्स काफी अच्छे माने जाते हैं. लेकिन आज अगर आप इर्द इर्द गिर्द देखोगे तो डेफिनेटली लोग जर्मनी का कहाँ पे भी बात नहीं करते हैं. वो बात करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जर्मन की प्रोडक्ट खराब है, लेकिन नया नाम उभर के आया है, वो है जापान. मेड इन जापान. अभी मेड इन जापान ये कैसे आया? तो जापान में, मैं आपको सभी को बोलता हूँ, हम एक बहुत पवित्र, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक बहुत पवित्र करियर में है, प्रोफेशन में है, जिसका काम है प्रीच करना, लोगों को पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना. जापान का जो ये बदलाव है उसमें मेन 3 गुरु थे, प्राध्यापक मंडली थी. जे दीज प्रोफेसर्स वर प्रोफेसर डेमिंग,
डेमिंग, प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग, उनका पूरा नाम था एडवर्ड डेमिंग। दूसरे थे फिलिप्स क्रॉस्बी, प्रोफेसर फिलिप्स क्रॉस्बी। और तीसरे थे जुरैन, प्रोफेसर जुरैन। एडवर्ड डेमिंग, फिलिप्स क्रॉस्बी और जुरैन, ये तीनों भी जापानीज नहीं थे। They were not from Japan. Two of them were from UK, one from USA। और उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जापानीज लोगों का सिर्फ पढ़ाते गए कि कोई भी चीज करो, क्वालिटी करो, कॉम्पिटेंस डेवलप करो, क्वालिटी करो, कॉम्पिटेंस डेवलप करो। और आज दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि जापान कहाँ पे है। तो ये एक डेबिंग साइकिल, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे आपको बच्चों को आप ये कर सकते हो कि इस डेबिंग साइकिल के माध्यम से आप उसको यानी प्लान डू चेक एक्ट, उसके अंदर काफ़ी सारे हैं, 7QC टूल्स है, मैं बाकी के इसमें नहीं जाऊंगा। अगर आप गूगल करोगे तो एक अच्छी केस स्टडी आप भी उसमें डेफिनेटली आपके अनुभव से, आपके रिसर्च पेपर से आप पढ़ पाओगे और शायद आपको आपके अध्ययन करने में भी काफ़ी सारा मदद उसकी होगी। सो I'm towards the end of my, almost towards the end of my session. Human beings, जो हमारे जो मनुष्य प्राणी है, वो कैसे एक चाय की, इट्स लाइक अ टी बैग, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। यानी क्या टी बैग यानी, सी ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक टी बैग्स। बिकॉज व्हाई आई एम कॉलिंग इट, because human beings are like tea bags. You don't know the strength until you get into the hot water. And I think this message we need to give to our students and to all of us also. Let's, let's uh, believe in ourselves, believe in our profession. Let's respect our profession and try to make it more and more effective. So this is all that I wanted to say for today's session. First half. Second half, we'll come to the more of a technical subjects. But I think this was important because need to understand before we move on to internships and OJTs. ये internships, OJT क्या है, क्यों लाया गया अपने NEP में, शायद उसका भी आपको थोड़ा सा आभास, थोड़ा सा एक अनुभव हुआ होगा कि ये बदलाव जो लाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी चेंज होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं। अभी मैं पुरानी कंपनी में था तो कई बार मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, तो वी यूज्ड टू स्टे इन 5 स्टार होटल्स। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग भले ही अच्छी होटल में जाते हैं, शायद एयर कंडीशनर मेरे घर पे नहीं होगा, लेकिन होटल में जब जाते हैं तब सब सुविधा होती है, एयर कंडीशनर होता है, फिर भी हमें नींद नहीं आती अच्छे तरह से। वो क्यों? बिकॉज मनुष्य प्राणी जो है, वो बदलाव जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सो इट्स चैलेंजिंग बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू मेक अ चेंज, वी नीड टू मेक अ बिगिनिंग। एंड ये जो बदलाव है, NEP 2020 का जो बदलाव है, जो अभी अपने भारतवर्ष में आया है, तो डेफिनेटली इसके शायद वो मेच्योरिटी में, क्योंकि मैं देखता हूँ पिछले साल भी कई बार इंटर्नशिप्स हुए, लेकिन जिस तरीके से कुछ कुछ बच्चे करते हैं इंटर्नशिप्स, तो हमें उनको उसका एहसास दिलाना चाहिए कि ये उनके लिए है। और फिर अंत में तो वही होता है, जो जीता वही सिकंदर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। Any questions? I think we'll keep it open before we actually break for. I think what's the time now? It's almost 3:45. So before we break for, I think we'll have a 5 minutes or break or so. Uh, then we can again, after 5 minutes, we can again assemble, and then we will move on to our technical session that is on OJT and internships. Any questions to ask? Or that it was
Fine. So how many minutes break is there? The host or, you know? So thank you. I'm happy that you like the session. It's more of my experience sharing that I've shared. And let me share with you guys that I have joined this profession out of my passion because I always wanted to be and to pursue this passion. I have been visiting, I have been delivering lectures during my even when I was engaged in industry, and I enjoy doing that because that helps me to also improve myself. So thank you very much. How much minutes break do we take? It's a 5 minutes or a 10 minutes? What is your standard time? Just wanted to understand. So it's 3:45 now. So we will assemble at uh, 10 minutes after 10 minutes. Okay, 10 minutes from now. Okay, thank you.
So we will start the session. ठीक है. Good afternoon, friends. We will again start with the the, the second session on the post break session on the internships. So I'll be sharing my the internship policy with you, uh, and also the GRs. I am not sure if you have gone through, but first I think let me share with you some of the GRs, which you can later take it for your own. So yeah, so what I've done is I've shared the GR with you guys. So you must have gone through this government GR. One is the GR dated 29 February 2024. If you have not, then I've shared the GR copy with you. I think this is if oh, it's how many pages? 94 pages GR. Okay. The total number of pages is 94. And then there are certain guidelines also, UGC guidelines. Uh, these again, UGC guidelines is around 15 pages. One second, just let me share the screen with all of you. Give me 2 minutes. So, have you gone through this GR? Just one question I would like to ask, this 29 February 2024 GR, and there is another GR which is there. So, sorry, there is another guidelines which are there. So, these are by these are the UGC guidelines on internships. These are again, I think 10, 15 pages. Have you gone through these GRs?
guidelines before. Hello. Can I have some responses? आपने ये महाराष्ट्र शासन का जीआर या फिर यूजीसी गाइडलाइंस पढ़ी है उसमें इंटर्नशिप्स के बारे में या ओजीटी के बारे में? नो. ओके. सो व्हाट आई सजेस्ट, फाइन. सो मैंने आप सब लोगों के साथ ये हमारे चैट बॉक्स में मैंने ये दोनों जीआर आपके लिए शेयर किए हैं. एक एक जीआर है और एक गाइडलाइन है. आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए. उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से इंटर्नशिप्स ये वो होनी चाहिए. एनीवे, हमने क्या किया यूनिवर्सिटी में? सी वी हैव डन सम चेंजेस ओवर हियर इन द यूनिवर्सिटी. चेंजेस ये किए हैं हमने थोड़ा सा, बिकॉज इसको कैसे, अगर आप जीआर देखोगे वो फरवरी का, तो वो ऑलमोस्ट 90+ पेजेस का है. और क्या होता है, कई बार हम लोग जब काम करते हैं तो देर आर मस्ट, शुड एंड कुड, नाइस टू हैव एंड मस्ट हैव एंड शुड हैव काइंड ऑफ थिंग्स. तो हमने क्या किया है कि फोकस किया है मस्ट के ऊपर, यानी ये तो होना ही होना चाहिए. उसके ऊपर हमने, बिकॉज ये स्टार्टिंग का समय है, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया है. और मैंने आपके साथ जो शेयर की है वो हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस जो हमने बनाई थी, वो पिछले साल ही बनाई थी हमने गाइडलाइंस. वो गाइडलाइंस मैं आपके साथ एक शेयर किया है. अभी स्क्रीन के ऊपर मैं वो गाइडलाइन आपको बताऊंगा सबको. देश, ठीक है. आई थिंक आई विल, 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन. Is the guidelines visible to all of you? The SOP visible on the screen to all of you? Guidelines. Anyone can respond. Can you see the can you see the guidelines for internships, which I've displayed on the screen? Great. Purnima is saying no. Sheikh Rizwan को शायद visible है. Purnima, I think you need to check at your end. Others can maybe one or two more comment. Sumedh is also saying no. Okay, fine. Let me reload it. मैं अब इसको रीलोड करता हूँ.
Now, now it is visible. Okay, great. So let's make a beginning. Great. So let's start. So basically, see what has happened is, let me share with you. See, when these guidelines were published by Government of Maharashtra and also the UGC, we have gone through the entire guidelines last year itself. Because last year we had students who were studying in PG और उनको second semester में, as you all know, that in second semester they had to undergo internships or OJTs. So we conducted there, to have the ease of understanding. Because क्या होता है, we are having around 180 affiliated colleges. So it's very challenging for all of us to, ensure that how do we take forward the process. So we had a very closed circuit, closed group discussions. We under the leadership of our Honorable Vice Chancellor, Sri Maheshwari ji. Then we had a under his guidance. Then what we did is we tried to rework on these guidelines. And as I said, क्या होता है कई बार, when we work on things, so there is must have, should have, and nice to have. In the sense, what we have done is, from those guidelines, that is 29 February 2024, and the UGC guidelines, we picked up what is must have. यानी उसके सिवा तो बन ही नहीं सकता है. तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो होनी ही होनी चाहिए. तो उस चीजों को लेके हमने क्या किया, इसका एक एसओपी बनाया. और वो एसओपी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. यू बिलीव मी, इट इज अ 1 पेज एसओपी. हमने एक पन्ने के ऊपर उसकी एसओपी बनाई और उसके करीब 5 या 6 एडिक्चर्स बनाए. सो व्हाट वी डिड इज फॉर द ईज टू इम्प्लीमेंट, एंड दैट इज हाउ देन वी कुड इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली. दिस वाज डन लास्ट ईयर इटसेल्फ. इसमें अभी थोड़े से बदलाव इस साल करेंगे हम लोग. तो अगर आप ये देखते हो कि यहाँ पे दिया है गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप ओजीटी प्रोजेक्ट वर्क फॉर द पीजी प्रोग्राम अंडर एनईपी 2020. यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत जो सेकंड सेमेस्टर में जो पीजी में होना चाहिए इंटर्नशिप्स ओजीटी, उसके बारे में ये गाइडलाइंस है जो हमने सर्कुलेट की. और सर्कुलेट ही नहीं, हमने क्या किया कि कई सारे वर्कशॉप्स दिए. हमने दुलिया में वर्कशॉप लिए, नंदुरबार में लिए, जलगांव में लिए, यूनिवर्सिटी में लिए. ऐसे सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स लिए, जो सीरीज ऑफ वर्कशॉप में मैं खुद जाके लोगों को ये यानी अपने स्कूल के जो प्रोफेसर्स, सॉरी कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे, उन सभी प्रोफेसर्स को जितने भी आए, उनको सबको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से करना चाहिए. ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% हमें यश मिला, लेकिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें से काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला. और उसके आगे हम लोग कई सारे और चीज़ें अभी करेंगे. तो इसको अगर आप देखते हो कि गाइडलाइन को हमने सिम्प्लिफाय किया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इसेन्स ऑफ इट. जो आपण गाभा म्हणतो, गाभा, त्या पॉलिसीचा जो गाभा आहे, जो महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला 29 फेब्रुवारीला दिला होता 2024ला, आणि तसे यूजीसीचे जे गाइडलाइन होते, उस सभी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, उसका जो मेन कोर है वो ध्यान में रखते हुए ये एसओपी बनाई गई है. अगर आप इस पे देखोगे तो हमने क्या किया कि जैसा भी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है, हमने बोला कि भाई ईच कॉलेज में क्या होना चाहिए, एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो होता है, उसी को हमने इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर यानी आईएनओ. अभी इस साल हमने वर्ड चेंज किया. पिछले साल हमने टीपीओ यूज किया था, इस साल हम लोग आईएनओ यूज करेंगे, इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर. तो उस इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर के ऊपर ये जिम्मेदारी थी. एंड देन प्लस ही इज सपोर्टेड बाय 2 असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स. इस तरह से हमने उसको ये किया. देन टिपिकली इसमें ये भी दिया कि भाई उन्होंने क्या करना चाहिए कि अलग अलग लोगों के साथ एमओयूज ये वो करने चाहिए. लेट मी शेयर विथ यू, ये इसकी शुरुआत हमने 2023 में की थी. यानी मई 2023 में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मई 2023, यानी ये पॉलिसीज तो बाद में आई. ये जीआर आपका गाइडलाइंस जो है करीब मेरे ख्याल से फरवरी 24 में आई. लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, बेस वर्क चालू किया, एमओयूज. तो हम सभी का कर्तव्य ये है कि आजू बाजू के जितने भी इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ हमारा एमओयू करना चाहिए. एमओयू इन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर having this kind of internship opportunities.
मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा अंदर के स्क्रीन में के आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू. यू कैन सी योर, इफ यू सी योर, आपको एमओयू दिख रहा है ये यहाँ पे? कैन यू ऑल सी द एमओयू? जस्ट कमेंट मी ऑन द बॉक्स, यस और नो. वेरी गुड. तो आपको दिख रहा है ये एमओयू कब किया आपने? 17 मार्च 2023 में. यानी एनईपी तो बाद में उस समय उस साल लाए भी नहीं थे. अच्छा, स्टिल द गाइडलाइंस. ओके, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी. अभी शायद आपको एमओयू दिख रहा होगा. एमओयू इज विजिबल? Okay, good. So, guys, if you see this, we have done the MOU with Confederation of All India Traders. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ हमने एमओयू कब किया है? 17 मार्च 2023. यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर इम्प्लीमेंट, जो स्टेट में जब चर्चा हो रही थी कि भाई इसके ऊपर हमें ये करना है. और अगर आप देखोगे इसके अंदर एमओयू के अंदर में कॉन्फेडरेशन ऑफ, व्हाट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स? अभी आप सब लोग एक सोचो कि कई सारे आपके कॉलेजेस जो होंगे, कई बार देहातों में होते हैं, तालुका लेवल पे होते हैं. तो वो तालुका लेवल में इंडस्ट्री वो कहाँ से आएंगे? हमें उद्देश्य क्या है हमारे एनईपी का? कि उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है. कौन से कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है? उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज सिखाना है क्या? नहीं. इंटर्नशिप में हमें उनको उनके पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है. यानी उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड दो स्किल्स बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन. और उस स्किल में काम करने के लिए क्या होना चाहिए? उसको प्रैक्टिकल अनुभव मिलना चाहिए. अगर मैं तालुका लेवल की बात करूंगा, अगर मैं छोटे से देहातों की बात करूंगा, तो वहां पे एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि वहां पे ट्रेडर्स तो होंगे ही होंगे. ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, ये इन सब भारतवर्ष के जितने भी ट्रेडर्स है, मैक्सिमम ट्रेडर्स इसके इसके मेंबर्स है. दिस इज, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारी महासंघ. आप अगर जो भी विलेज में हो, तिथे कुठे ना कुठे तरी ये अपने को व्यापारी महासंघ से आपको ये होगा. उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. जैसे अगर मैं आपके छत्रपति संभाजीनगर की बात करूं, तो वहां पे अजय शाह साहब है, जो इस व्यापारी महासंघ के सेक्रेटरी थे. फिर बाद में दूसरे भी और कई सारे मेंबर्स है वहां पे. एक मिस्टर कावले है, एक और दो चार लोग हैं. खैर, तो काफी सारे पॉजिटिव लोग हैं ये. वो चाहते हैं, अजय शाह ने मेरे साथ बात की, वो बोले कि सर, आप इंडस्ट्री में हो, आप जब इंडस्ट्री में थे तो इंडस्ट्री में आपके साथ काम करने के लिए कई लोग इच्छुक होते हैं. लेकिन आप मेरी मेरी दुविधा सुनिए. हम लोगों की दुविधा ये है कि हम जब दुकान में काम करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें दिक्कत होती है कि हमारे कोई अगर सेल्स पर्सन चाहिए, काउंटर संभालने के लिए आदमी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि आजू बाजू के वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से मैं किसी को रखने की कोशिश करता हूँ. आपके अगर बच्चे आके हमारे यहाँ पे काम करेंगे, भले ही उनका समर इंटर्न्स हो, हम उनको लगा तो आने जाए, वो तो कहने का इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. बिकॉज हमें भी कभी कई बार आधा घंटा भी अगर काउंटर छोड़ के जाना है, तो हम लोग नहीं जा पाते, बिकॉज हमारे पास कई बार मैन पावर नहीं रहती है. तो व्यापारी संघ की ये व्यापारियों की दिक्कतें थी.
तो दे वर सो हैप्पी कि चलो यार एक हम लोग इस तरह से वो तो इन्वॉल्व करके अगर एकेडमिक हमारे साथ काम करेंगे तो हमें भी बच्चे मिलेंगे काम करने के लिए, और वो विन विन सिचुएशन बन सकती है। तो इस तरह से आपने देखा है कि दिल्ली के उनके पदाधिकारी आए थे, फिर समाजनगर से भी आए थे। और अगर आप देखोगे कि ये इसमें आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केबीसी एनएमयू, encourage interaction between local HEI and local CIT members, HEI orientation about student during internship, encourage HEI faculty for sharing knowledge, imparting knowledge through educational business seminars to CIT members। यानी कहने का मतलब उनका कहना क्या था कि जैसे अभी जीएसटी में कुछ अगर बदलाव हो गए तो सर एक काम कीजिए, बोले कि आपके फैकल्टी मेंबर्स को बोलिए कि हमारे लिए एक वर्कशॉप ले कि जीएसटी नहीं, क्या जीएसटी में क्या बदलाव हुआ है या टैक्सेशन में क्या बदलाव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई निर्मला सीतारमन जी यानी कहने का मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से अगर कोई बदलाव आता है टैक्सेशन में, तो कॉलेजेस ने क्या करना चाहिए, कॉलेज के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के फैकल्टी मेंबर्स ने क्या करना चाहिए, हमारे लिए कुछ सेशंस रखने चाहिए। या हमारे पास जो लोग काम करते हैं उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टीम वर्क कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी इंटरेक्शंस हो सकती है, इसके ऊपर भी सेशंस रख सकते हैं। उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीआईटी, प्लीज रीड दिस। इस पे क्या लिखा है, इफ यू सी हियर, encourage local trade organizations to formal opportunities of internship। देखो पहला ही ऑब्जेक्टिव है इंटर्नशिप टू द केबीसी एनएमयू स्टूडेंट, conduct awareness program of local traders association from Villiers, invite such programs university officials। anyway, coming to what I'm trying to say, अब ये एमओयू हमने बनाया उनके साथ, ये एमओयू देखिए, ये साइन भी हुआ है। देखो नेशनल प्रेसिडेंट दिल्ली से आए थे, और बिहाफ ऑफ ये पूरे इनके मेंबर्स हैं, पूरे सब मेंबर्स उनके यहाँ पे आके, देखो ये अजय शाह मैंने जब बात किया, फिर बाद में ये बाकी के मेंबर्स आए, और इस तरह से ये एमओयू 17 मार्च 2023 को यहाँ पे हुआ। तो एनीवे, नाउ कमिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई विल जस्ट क्विक स्विच टू माय आवर एसओपी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि किस तरह से ये, so now I've again come back to it. So basically, the work of faculty is, or the institute is, try to build such MOUs so that this kind of opportunities can be created. Then what happened is that we also to identify a mentor, and then we defined that one credit is equal to 45 hours. इस तरह से, and then we created some guidelines for the students also. You have a copy of this। इस सेशन के बाद भी अगर किसी को कोई भी अगर सवाल है, तो what you can do is you can always contact me। I will help you out in drafting your own policies and whatever wherever help you require। If you look at this guidelines for the students, so उनके लिए भी हमने गाइडलाइन बनाई कि भाई फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, इन्हें कपड़े ठीक ठीक से पहन के जाने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने फॉलो करनी चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए, कोई भी चीज पब्लिश करने के पहले उन्होंने क्या करना चाहिए, उसका अप्रूवल लेना चाहिए। और इस तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड, हमने उनको वो भी बताया कि भाई यू शुड क्रिएट अ गुड इंप्रेशन अबाउट योर इंस्टीट्यूट। यानी आप जब जाते हो तो इंटर्नशिप के लिए, बिकॉज वो स्टूडेंट को नहीं पहचानते, वो यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को पहचानते हैं। उस तरह से भाई बाद में हमने इवैल्यूएशन के भी गाइडलाइंस बनाए कि वो प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन कैसा होगा, यानी अटेंडेंस के ऊपर, उसका लर्निंग आउटकम, कंडक्ट और उसके रिपोर्ट सबमिटेड के ऊपर होगा। अभी इसमें क्या किया है कि इसमें हमने कुछ ये इवैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में भी हमने इस एनेक्जर्स में हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी इसके अंदर।
If you look at these annexures, like for example, I'll just scroll you. See, TPC will maintain a database which is called as Annexure A. अभी Annexure A में क्या किया? Annexure A में स्टूडेंट की जानकारी हमने फिल की है. मैं आपके साथ Annexure A भी शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा. इसका पर्पज ये था कि सबने यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली अगर जमा करते हैं तो हमें रिपोर्ट MIS बनाने में सुविधा होती है. उसी तरह से एनेक्जर बी, हमने उसका अटेंडेंस शीट बनाई, उसका एनेक्जर बी रखा, और लर्निंग आउटकम कम इवेलुएट करने के लिए मेंटर के लिए एनेक्जर सी बनाया, और कंडक्ट और ओवरऑल फीडबैक ये वो सब सुपरवाइजर. उस तरह से ये एक एनेक्जर डी और ई. तो लेट्स, आई थिंक लेट्स गो एंड सी व्हाट इज एनेक्जर ए. फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने यहाँ पे की, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन में, की आपले प्रश्न आपले विज्ञान, आपले प्रश्न आपले विज्ञान. मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपले प्रश्न आपले विज्ञान इस स्कीम के बारे में आपको मालूम है? डू यू नो अबाउट द स्कीम आपले प्रश्न आपले विज्ञान? तुम्हाला माहिती आहे का आपले प्रश्न आपले विज्ञान उन्नत महाराष्ट्र अभियानचा आहे. बर, जस्ट से येस और नो. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रूरल एरिया, तालुका एरिया, attending this workshop? I'm sure anybody from rural area, जे कॉलेजेस जो बस कुछ रूरल एरियाज में होंगे, ऐसे कॉलेज से भी कुछ प्राध्यापक आए होंगे, बराबर. जैसा विशाल ने कहा है यस, सुमेध ने कहा है यस, करेक्ट. तो क्या हो जाता है कि अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. एक 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 छोटा सा गांव है जहाँ पे ये कॉलेज है, और वो कॉलेज में आपको इंटर्नशिप देनी है. उस गांव में दुकान भी दो चार ही है, या फिर 7-8 दुकान है, लेकिन बच्चे तो आपके पास 100 है. तो उनको कैसे आप अपॉर्चुनिटी दोगे? तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है, आपले प्रश्न आपले विज्ञान. मैं आपको जानकारी वो तो ये दूंगा कि भाई आप उन्नत महाराष्ट्र अभियान, यानी उन्नत, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इनिशिएटिव है, उन्नत महाराष्ट्र अभियान, अभियान के अंतर्गत ये अभियान, उन्नत महाराष्ट्र अभियान, अगर आप इसको टाइप करोगे गूगल में तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी. उस उन्नत महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत भी हमने क्या किया कि काफी सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट की. जैसा मैंने पहले आपको CIT के बारे में बताया, उस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि आपले प्रश्न आपले विज्ञान के माध्यम से भी हमने काफी सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की. 2 मिनट में आपको वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे एक मिनट शेयर करता हूँ. स्क्रीन दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? गुड. तो अगर आप देखोगे तो ये उन्नत महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत क्या किया कि ये देखो आप इंटर्नशिप, और इस उन्नत महाराष्ट्र अभियान का जो करता, वो तो जो नोडल एजेंसी है वो IIT बॉम्बे है. IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, is the nodal agency appointed by government of Maharashtra to implement internships. मित्रों हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप स्पेशली रूरल एरिया से है, तुम्ही खेड्यापाड्यातून असाल, जिथे तुम्हाला इंटर्नशिपच्या बद्दल खूप चॅलेंजेस येतात, तो प्लीज आप चिराग को कांटेक्ट कीजिए. चिराग बराठे, वो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, और आपको वो जरूर
He is very, very positive and passionate guy. He will help you on this. आप अगर देखोगे इस उन्नत महाराष्ट्र अभियान में क्या किया है कि उन्होंने क्या किया कि ये काफी अभी उनका क्लासरूम ट्रेनिंग है, आपको दिख रहा है इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, देखो. कैन यू सी द पिक्चर? अच्छा, ओनली फोल्डर्स आर विजिबल. ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. इज इट विजिबल नाउ? ओके गुड. अगर आप देखोगे तो इस उन्नत महाराष्ट्र अभियान मैं वापस पहले से ये करता हूँ स्क्रॉल. अगर आप देखोगे ये सेशन है, वो तो हमने फैकल्टीज के लिए किया था. आपले प्रश्न आपले विज्ञान, APAV इंटर्नशिप्स. ये चिराग मराठी, जैसे मैंने कहा कि चिराग मराठी को आप बात कीजिए. आप अगर रूरल एरिया में से है, वो पूरी तरह से जी जान से आपको पूरा गाइड करेगा, हेल्प करेगा. IIT बॉम्बे के, यानी उमा इज नथिंग बट उन्नत महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत IIT बॉम्बे जो है, IIT बॉम्बे इज द टीम विच इज फॉर उन्नत महाराष्ट्र अभियान. So they are the nodal agency in the government state of Maharashtra. Are you able to see these projects? Bring a session. Yeah. So I'm just sharing. Is the Excel sheet visible to all of you? This is Annexure A of the policy. I've already shared the SOP with all of you. Just मेरे को हाँ या ना में जवाब देना. Excel sheet is visible. Great. गुड गुड गुड. सो एक्सेल शीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एकेडमिक ईयर, स्टूडेंट का PRN यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ABCD ID. एक चीज याद रखो कि ये पूरे डेटा कैप्चर होना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के हमारे को रिपोर्ट्स में काम में आता है. सो सीट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जेंडर, प्रोग्राम, फैकल्टी, सब्जेक्ट, सेमिस्टर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कॉलेज का कोड यानी एफिलिएटेड कॉलेज होगा तो उसका कोड होता है. नेम ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, दुलिया, जलगांव, नंदुरबार, व्हाटएवर. नेम ऑफ द मेंटर, नेम ऑफ मेंटर, उसका फोन नंबर्स, ये वो सब. देन इंटर्नशिप कब से कब तक थी, फ्रॉम टू डेट. फिर नेम ऑफ द इंटर्नशिप सुपरवाइजर जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से होता है, इंटर्नशिप सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये वो सब कुछ. INO इज नथिंग बट इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर. तो उसका इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर कौन है, TPO, प्रिंसिपल, ये वो सब कुछ.
ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये हमारा था, हमने एग्जॉस्टिवली इसको कैप्चर किया। उसकी मदद कहाँ पे हुई, बिकॉज आगे चल के क्या होता है, आपको जब उसके रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो रिपोर्ट में क्या होता है, आपको काफी सारी उसकी मदद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शेयर विथ यू, आई ट्राई टू सी इफ आई कैन। ठीक है, ये इंटर्नशिप्स की हमने रिपोर्ट्स बनाई थी। एनीवे, सो एनेक्जर 1 मैंने बताया, फिर एनेक्जर बी बताता हूँ मैं आपको। सी एनेक्जर बी, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए। जस्ट एक बार बोल देना कि एनेक्जर बी विजिबल है आपको, एनेक्जर बी, यू कैन जस्ट टाइप एंड से यस, वन ऑफ यू। ओके, गुड। सो एनेक्जर बी, सो इफ यू सी हियर, हमने क्या किया इसमें, फिल किसने करना है, बच्चे ने फिल करना है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, उसमें जैसे ये कम से कम 4 वीक्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। दिस एनेक्जर बी ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू, एनेक्जर ए, एनेक्जर बी। सी, नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, let's not confine it to ourselves. You can tell me, come back if you read this, and if you find that something is missing, give me a call. We will try to improvise it. As I said, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Because हम लोग लिमिटेड लोगों ने ये बनाया है, काफी सारे जब उसमें और भी कुछ सुझाव देंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। सो योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इस तरह से वो बच्चे ने उसका अटेंडेंस डालना है, और उस अटेंडेंस को इवेलुएट कैसे किया जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज, उसको नंबर ऑफ क्रेडिट्स और प्रेजेंट डेज कितने थे, फिर ये स्टूडेंट का फीडबैक। मनोज भी सेशन मध्ये ऑनलाइन तो 40 मिनट्स से स्टूडेंट का फीडबैक भी। एंड बिलीव मी, ये सब पूरे हमने जो लिए ना यहाँ के फीडबैक के लिए भी, ये हमने उस जो यूजीसी के गाइडलाइन थे, या फिर अपने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जीआर था, उसमें से हमने क्या किया, उसको क्लब करके उसी इसमें से, वो तो यानी उस मी तो समझ लो कि वो वी हैव नॉट लॉस्ट द फोकस, बट वी हैव केप्ट द, ये मतलब यूजिंग दैट गाइडलाइंस वी हैव ट्राई टू मेक इट मोर यूजफुल एंड फ्रेंडली। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर है, और यहाँ पे मेंटर, मेंटर कहाँ से होता है, द मेंटर इज अ पर्सन हु गाइड्स। तो ये मेंटर होता है जो 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 फैकल्टी का है। लाइक फॉर एग्जांपल, वन कॉलेज इज हैविंग, लेट अस से साइंसेस डिपार्टमेंट, अलग फैकल्टी होगी बीएससी करने वाले बच्चे, और दूसरे बीकॉम में होंगे जो कॉमर्स के होंगे। तो कॉमर्स में से ही उनके लिए मेंटर रहेगा, और साइंस वालों को साइंस में से, वो डिपार्टमेंट से कोई मेंटर रहेगा। तो वो मेंटर को यहाँ पे साइन करनी है। देन लेट्स लुक एट एनेक्जर सी। अब ये आपने देखा बच्चों का अटेंडेंस था, बाद में है दूसरा एनेक्जर सी, इज फॉर मेंटर्स। आर यू एबल टू सी दिस एनेक्जर सी? यू कैन जस्ट टाइप यस। इज एनेक्जर सी विजिबल? गुड। सो दिस एनेक्जर सी ऑल्सो, इफ यू सी, ये पहला जो पार्ट है, ये पूरा लड़के नहीं वो तो स्टूडेंट नहीं भरना है। और एनेक्जर सी को हमने क्या किया कि एनेक्जर सी में इसको मार्क्स किया, क्वांटिफाई किया, बिकॉज सी अल्टीमेटली यू नीड टू बी मेजर। सो इसमें भी हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द
aspects which were given in the GR and the UGC guideline. तो इस तरह से हमने अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, ये 5 पॉइंट स्केल में उसको ये किया और इसमें से मार्क्स भी उनको दिए 8, 7, 5, 3। तो मेंटर को क्या करना है, सिर्फ टिक करना है, ज्यादा लिखने का काम मेंटर के लिए नहीं रखा है। हमने मेंटर के लिए ज्यादा लिखने का काम नहीं रखा है, बिकॉज वी नो द वर्कलोड दैट ही विल बी हैविंग। तो इस तरह से इसके टोटल आएंगे और यहाँ पे आउट ऑफ 40 मार्क्स द मेंटर कैन गिव टू द स्टूडेंट। यहाँ पे मेंटर का सिग्नेचर एंड साइन। लेट्स कम टू एनेक्जर डी। ओके, एनेक्जर डी में क्या किया है? नाउ एनेक्जर डी में, okay, once again, just confirm whether Annexure D is visible to all of you. Annexure D is visible. Okay, good. So Annexure D is for the assessment seat. अभी देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक्सटर्नल असेसमेंट जरूरी है। तो एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए अगेन सेक्शन 1 इज टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट अपने अपनी इंफॉर्मेशन भरेगा इसमें। देन एनेक्जर पार्ट बी जो आता है सेक्शन 2, इसका section 2 is for the supervisor to fill. If you see here, for the supervisor to fill, again dependability, communicates effectively, creativity, quality of work, professionalism, time and management discipline, time management and discipline, इसके ऊपर वो supervisor को भी क्या करना है, सिर्फ टिक करना है। When I am saying supervisor को टिक करना है, यानी जहां पे वो जाता है, अगर कोई दुकान में गया तो वो दुकानदार टिक करेगा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गया तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर टिक करेगा, या फिर कोई इंडस्ट्री में गया तो वो इंडस्ट्री के उसकी जो भी सुपरवाइजर है वो टिक करेंगे। इसको भी हमने क्या किया है कि आउट ऑफ 40 मार्क्स किया है। एक्सटर्नल असेसमेंट का रेशियो होता है 60:40। तो 40 मार्क्स इसके, और वो लड़का, वो ये स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा, बिकॉज क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वापस कॉलेज में आने के बाद सबमिट करेगा, इसलिए कॉलेज में आने के बाद डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल फीडबैक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 20 मार्क्स यहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से वो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो ये अभी इफ यू सी योर, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भी हमने क्या किया है कि रेंज दिया है, इट विल बी गिवन बाय द इंटर्नशिप सुपरवाइजर। तो इस तरह से इंटर्नशिप सुपरवाइजर से, लाइक फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप सुपरवाइजर क्या करेगा, इसको सिर्फ रेटिंग को टिक करेगा। The internship supervisor will take, and once the internship supervisor takes, marks, see here, marks will be allocated by the mentor. If you see here, marks will be allocated for this section, section number 3. The marks will be allocated by the mentor in the following range. Excellent अगर है तो 17 से 20, depending on the quality of work that he has given. अगर excellent है लेकिन बहुत ये नहीं है, वो तो एक्सेलेंट में भी अगर वो उसको 17 से 20 मार्क के मार्क्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किसी को 17, किसी को 18, किसी को 19, किसी को 20 मार्क, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क सबमिटेड। बिकॉज ये सबमिशन जो होगा, बिकॉज दिस विल बी डन आफ्टर द प्रोजेक्ट, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, व्हेन ही कम्स बैक टू द कॉलेज, इसलिए वो मेंटर देगा मार्क्स। लेकिन मेंटर देते टाइम क्या करेगा, ही विल यूज द गाइडलाइन गिवन बाय द सुपरवाइजर। जैसा सुपरवाइजर ने यहाँ पे मान लो टिक किया सेटिस्फैक्ट्री के ऊपर, तो मेंटर के हाथ में रहेगा 8 मार्क देना है, 9 मार्क देना है, या 10 मार्क देना। ये हो गया उसके मार्क्स। देन फाइनल हमने क्या किया कि सर्टिफिकेट को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। जस्ट टेल मी वेदर द सर्टिफिकेट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यू कैन जस्ट टाइप इन से यस, द सर्टिफिकेट। गुड। सो लुक एट द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को भी हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो भाई सर्टिफिकेट कैसे देंगे, नेम ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज यानी कैंपस का नाम, स्कूल का नाम, फिर बाद में दिस इज टू सर्टिफाई दैट द फॉलोइंग स्टूडेंट ब्ला 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 व्हाटएवर द केबीसी एनएमयू प्रान नंबर, एंड देन वी हैव सेड इज NEP ABCD ID, then pursuing the course semester number whatever, एक क्रेडिट, 2 क्रेडिट, स्टार्ट डेट, एंड डेट। इस सर्टिफिकेट के ऊपर हमने सिग्नेचर दिए हैं मेंटर के,
देन टीपीओ का और डायरेक्टर प्रिंसिपल का। अभी इस बार क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं अरे यार वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जो है वो वही ऑर्गेनाइजेशन से लाना। अभी क्या होता है, कई बार अगर आप मान लो इफ यू आर इन औरंगाबाद एंड यू सेंड योर चाइल्ड फॉर इंटर्नशिप, लेट अस से टू जॉनसन एंड जॉनसन, और लेट अस से वेरॉक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, वहां पे भेजोगे, तो वो क्या होता है कई बार ना, वो ऑफिसर लोग, उनको उतनी पावर नहीं रहती है कि भाई वो सर्टिफिकेट इस तरह से इशू करना है, क्या करना है, वो अपने लिए ये है, वो उसका टाइम क्यों ये करेगा अपनी इसमें, कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे। तो ये मेंटर कौन से बेस पे साइन करेगा? अभी मेंटर भी जब साइन करेगा, मेंटर और डायरेक्टर, सो दे विल साइन दिस सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द एनेक्जर डी। ये एनेक्जर डी कौन साइन करता है? सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर कौन होता है? Supervisor is a person from the industry or the organization. So you also have a supporting document before signing this certificate to say that this certificate is being issued based on the documentation that you have. Tomorrow if I audit and I say आपने कैसे certificate issue किया इसको, तो आपने issue किया based on the document that is already there, which is signed by the supervisor of that organization. करेक्ट? जिसने से वो टिक मार्क करके भरा है। तो इस तरह से वो सर्टिफिकेट भी को भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो ये हो गया हमारा पिछले साल का जो हमने किया। ओके, इस बार हम लोग इसी को, बिकॉज ये काफी सारा अच्छा लगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी, तो फिर हमने इसके अंदर क्या हुआ कि इवन स्टेट लेवल ओजीटी कमेटी बनाई गई है। स्टेट लेवल की ओजीटी कमेटी बनाई गई और हमने क्या किया कि इसके लिए भी एक, सॉरी, ये आपको दिख रहा है ड्राफ्ट? Straight draft is visible. This straight draft, one second, I'm just putting up the draft. Is the draft visible to all of you? This, you can just say yes or no. Okay, good. So basically, if you see, जो हमने 2023 में इम्प्लीमेंट किया था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के एक सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, ये स्टेट के लिए ड्राफ्ट बनाया है। इफ यू सी हियर, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का चिन्ह है, यहाँ पे हमने एनईपी 2020 बोला है, गाइडलाइन फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज। दीज आर स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो अभी तक ये वो तो रोल आउट नहीं हुआ, इसलिए इसको ड्राफ्ट बोला गया है। बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वही हमने जो आपके साथ मैं अभी शेयर किया हूँ यूनिवर्सिटी, उसका शेयर किया उसी तरह से, लेकिन सिर्फ इसके अंदर हमने क्या किया कि थोड़ा सा एक बदलाव किया है। इस तरह से हमारे को ये होता है कि इंटर्नशिप कब कब होने वाली है। बिकॉज अभी क्या है कि पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी इन द सेंस द स्टूडेंट कैन कंप्लीट फर्स्ट ईयर ऑफ ईयर, और सेकेंड ईयर ही में गो टू सम अदर कॉलेज, फॉर थर्ड ईयर ही में गो टू समथिंग एल्स। पोर्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो सबका एक यूनिफॉर्म इस तरह से होना चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अगर आपने देखा, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास यूजीसी है, सॉरी इंटर्नशिप है, और उसी तरह से पीजी के लिए ऑनर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम इज नथिंग बट ये, यानी पीजी के बेसिकली ये 8वें सेमेस्टर में आता है। और पीजी के लिए क्या होता है, फॉर पीजी स्टूडेंट्स इट विल कम इन द सेकेंड सेमेस्टर। यहाँ पे लिखा है देखो, इंटर्नशिप ड्यूरिंग द पीजी आफ्टर ग्रेजुएशन इज इन द सेकेंड सेमेस्टर। तो इस तरह से दिस दिस इज अंडर रिवीजन,
So this is a draft. So I'll not share this copy, but what I'll do is I will share all the annexures with you one by one. So basically, whatever you have seen, I'll be sharing over here annexures. जैसे अभी आपको मैंने इंग्लिश का एसओपी शेयर किया, I have shared this Excel sheet with you. So annexure I've shared. So whatever I have presented, I have also shared with you. Now let's look at, like, basically after doing all this, what was the, yeah. So I'll just share some, circular information collection. If you see here, are you able to see the screen? Are you able to see the screen? Okay, good. हे बघा 6 नोव्हेंबर 2024 आम्ही काय केलं, 6 नोव्हेंबरला प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय हे ते सगळे मान्यताप्राप्त परिसर असतात. शैक्षणिक धोरणानुसार इंटर्नशिप ओजीटी आपल्याला करायचं आहे. या संदर्भात आम्ही त्यांना काय केलं, त्यांना काही माहिती पण आम्ही भरून मागवली त्यांची, बरं का, नोव्हेंबरला. म्हणजे कंटिन्युअसली वी फॉलो अप विथ देम. एक मिनिट हा, अजून तुम्हाला दाखवतो. वी विल जस्ट होल्ड ऑन. Is the letter visible? 6th of December 2024. Is the letter visible? 6 December 2024. Good. Okay. So if you see this, 6 दिसंबर 2024 को हमने एक लेटर भेजा पूरे हमारे जितने भी 160 कॉलेज या जो भी है हमारे कॉलेजेस, उनको सबको भी लिखा है. देखो, एनईपी अंतर्गत पीजी विद्यार्थ्यांसाठी येऊ घातलेल्या अंतर्वासिता इंटर्नशिपची पूर्व तयारी. और ये इंटर्नशिप कब होने वाली है? मई 2025 में होने वाली है. यानी 4 महीना पहले ही, 4 से 5 महीना पहले ही हमने उनको वापस क्या किया, बंबार्डिंग रिमाइंडर. आपणास पीजी विद्यार्थ्यांसाठी येऊ घातलेल्या अंतर्वासिता युजीटीसी पूर्ण तयारी करायची आहे. त्याकरता आपण आपल्या परिसरात जिल्ह्यातील विविध कंपन्या, शासकीय निमशासकीय कार्यालय, एनजीओ, व्यापारी संघटना व आस्थापनासोबत एमओयू लिंकेजेस करण्याची तयारी करत असाल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. आपल्या सहाय्यासाठी, नाउ व्हॉट वी हॅव डन, आपल्या सहाय्यासाठी तक्त्यामध्ये काही महत्वाचे दस्तावेज जोडत आहोत. देखो, ओजीटी मार्गदर्शक सूचना जो आपको मैंने शेयर किया, ये बघा, एसओपी हमने उनको शेयर किया. ये देखो, एमएस एक्सेल शीट जो आपको मैंने शेयर किया वो उनको शेयर किया. फिर एमओयू, एमओयू का हमने ड्राफ्ट भी उनको शेयर किया, वर्ड का डॉक्यूमेंट मसूदा जो जो कि वो यूज कर सकते हैं. फिर हमने जिन जिन लोगों के साथ एमओयू किए
ये देखो, ये हमने जो भी एमओयू किए, आपने प्रश्न आईआईटी बॉम्बे, ये वो सभी एमओयूज की भी कॉपी भी उनको शेअर की. और वो शेअर करने के बाद हमने ऊपर से क्या लिखा है, पीजी विद्यार्थ्यांसाठी येऊ घातलेल्या आंतरवासिता इंटर्नशिप यशस्वी करण्यासाठी आपल्या अधिकचे सहाय्य मार्गदर्शन हवे असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा. फोन नंबर के साथ उनको पूरा ये दे दिया है. कहने का मतलब ये क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी नीड टू बिल्ड, बिकॉज दिस इज अ चेंज. जैसे मैंने कहा कि कोई भी चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है. वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस हार्पिंग हमें करनी जरूरी है. तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली उनको लोगों को पीछे लगते हैं, वो तो सब कॉलेजेस के भी पीछे लगते हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज शेयर करो, हम आपको आपको ये करेंगे. वो तो कहने का मतलब वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस. Any questions till now, you can always ask. In the meanwhile, I'll just share with you other things also. मैं आशा करता हूं कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है. वेरी गुड, दिख रहा है. आपको मैं ये बताना चाहता हूं. देखिए, ये मेल कब का है. ये मेल हमने भेजा है यानी 22 तारीख को, 22 सितंबर, सॉरी 22 फरवरी 2025, यानी पिछले हफ्ते में. आज की 27 तारीख है, 5 दिन पहले हमने ये मेल भेजा उनको. इस मेल पे अगर आप देखोगे तो उनको हमने क्या किया कि पूरे अटैचमेंट्स यहाँ पे भेज दिए, देखो उनको. देखो, ये कब का है. ये 22 फरवरी 2025, यानी 22 फरवरी 2025 को वापस हमने इनको ये किया कि स्मरण पत्र, यानी रिमाइंडर जो दिसंबर में भेजा था ना, उसी को हमने क्या किया, एक रिमाइंडर भी उनको दिया. वापस उनको लिखा कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करो. साइन करके ये भेज दिया. तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्रेसिवली आपको पार्टिसिपेट करना है. वो तो सी, वी हैव टू डू इट विथ ऑल द पैशन एंड वी हैव टू डू इट, देन ओनली थिंग्स विल हैपन. हाँ, दिक्कतें काफी होंगी, चैलेंजेस काफी होंगे आपको, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, उसका आगे बढ़ने के लिए देखना है. बिकॉज कैसा है कि ये बदलाव है, और ये बदलाव की सिचुएशन कई मे बी 2-3 इयर्स डाउन द लाइन, 2-3 साल के बाद शायद फिर वो डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगा, जो कि अगेन डेबिंग साइकिल के बाद, यानी पीडीसीए हम लोग जो बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट. फिर बाद में उसका दूसरा पड़ाव है ड्रैम. ड्रैम यानी डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. एक बार ये रूटीन हो गया तो क्या होगा, शायद 3 साल के बाद, 4 साल के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों को जब आदत पड़ जाएगी. जब तक आदत नहीं पड़ती, हमें उसको कंटिन्यूसली फॉलो अप लेते रहना है. मैं आपको क्विकली कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा इंटर्नशिप के, 1-2 मिनट. इंटर्नशिप 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 एकेडमिक प्रोग्राम्स इंटर्नशिप. ठीक है, स्टूडेंट का फीडबैक हमने एनालाइज किया है. इंटर्नशिप रिपोर्ट आईक्यूसी.
ठीक है, इस तरह से इंटर्नशिप रिपोर्ट भी बनाए। तो ये फिर बाद में ये बताना चाहूंगा मैं, आपले प्रश्न आपले विज्ञान, तर हे कुठे आहे? आपले प्रश्न आपले विज्ञान चेक. फाईन. आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? आपले प्रश्न आपले विज्ञान, आर यू एबल टू सी? स्क्रीन विजिबल आहे का? आपले प्रश्न आपले विज्ञान चा रिपोर्ट मी तुम्हाला दाखवतोय. ओके, व्हेरी गुड. सो बेसिकली हा जो रिपोर्ट आहे, हा दाखवायचा पर्पज याच्यासाठी आहे, बिकॉज इफ यू लुक ॲट जलगाव टेरिटरी, इट इज दुलिया, नंदुरबार अँड जलगाव. नंदुरबार, यू कॅन इमॅजिन, ट्रायबल एरिया, ऑलमोस्ट 58% ट्रायबल पॉप्युलेशन आहे तिथे. मग तिथे आम्हाला जाऊन इंटर्नशिप आम्ही कसं देणार, जोपर्यंत आपल्याला आपले प्रश्न आपले विज्ञानच्या माध्यमातून आपण हे इंटर्नशिप यशस्वीरित्या करू शकतो. हे आम्ही त्यासाठी काय केलं, हे बघा, आम्ही काय केलं, आपले प्रश्न आपले विज्ञान करण्यासाठी आम्ही त्यांच्या मीटिंग्स घेतल्या. त्यांना आम्ही कॅपॅसिटी बिल्डिंग, म्हणजे फॅकल्टीला आम्ही ट्रेनिंग दिलं. फॅकल्टीला ट्रेनिंग दिल्यानंतर आम्ही लोकल डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन बरोबर आम्ही त्यांचं हे केलं, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सला इन्व्हॉल्व्ह केलं आम्ही याच्यामध्ये, फॅकल्टीला केलं. आणि याच्या माध्यमातून नंतर हे तुम्ही पाहिलं असेल तर आमच्या व्हीसींनी, तुम्ही इथं पाहिलं तर हे कलेक्टरला, म्हणजे हे जे कलेक्टर आहे तर त्यांना आम्ही असे सगळे तिन्ही कलेक्टरला पत्र दिले. वी रोट टू ऑल द कलेक्टर्स. आणि कलेक्टर महोदयांनी पण काय केलं, मग आम्हाला त्यांना जाऊन समजावून सांगितलं आम्ही त्यांना. आता तुम्ही जर पाहिलं तर म्हणजे हे बघा, जिल्हा अधिकारी कार्यालय नंदुरबार दिसतंय तुम्हाला? यांनी गेल्या वर्षी 4 एप्रिल 2024ला त्यांनी पूर्ण जेवढे कोणचे शासकीय यंत्रणा आहेत, ऑफिसेस आहेत, त्या सगळ्यांना त्यांनी लिहिलं, हे बघा, आपले प्रश्न आपले विज्ञानच्या अंतर्गत ही संकल्पना विकसित करण्यासाठी KBCNMU, NEP 2020 ह्या सगळ्या अनुषंगाने त्यांनी तिथे परिपत्रक काढलं. आणि त्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या मीटिंग अटेंड कराव्या म्हणून त्यांनी हे असं परिपत्र काढलं. आणि त्याचं परिपत्रक ड्राफ्ट सुद्धा आम्ही तयार करून दिला. कलेक्टरनी एवढं आम्हाला कॉपरेशन केलं. कारण जेव्हा ते पाहतात की बाबा आपण स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होतोय आणि नंदुरबारचेच नाही, तर त्याप्रमाणे आपले तुम्हाला जर दाखवलं तर इकडं हे जळगावचे कलेक्टर आहेत, जळगाव कलेक्टर. तसंच या बाजूला धुळे कलेक्टर. म्हणजे ह्या सगळ्यांनी मसुदा तो कॉमन होता. आणि अशा माध्यमातून ह्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला प्रशिक्षण कार्यक्रम. हे बघा, देर आर टू थिंग्स. आम्ही रडत बसावं की यार नंदुरबार सारख्या ठिकाणी आम्ही कसं काय इंटर्नशिप करणार, काय करणार. मग मुलांना त्यांच्या भरोश्यावर, त्यांच्या वाऱ्यावर सोडणं की बा जा मुलांना, तुम्ही पहा, तुम्हाला जिथं जमेल तिथे जा. पण एवढं सोपं नाहीये ना खेड्यापाड्यांनी करणं. म्हणजे स्पेशली नंदुरबार सारखे चॅलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट आहे, गडचिरोली आहे, नंदुरबार आहे,
किंवा आपल्या भागात सुद्धा आपके भी एरिया में काफी सारे ऐसे कुछ रूरल एरियाज होंगे, तो आप जरूर अपने प्रश्न, अपने विज्ञान इसके माध्यम से आप कर सकते हो। उसके अंदर भी अगर आपको कुछ अगर सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो मैं आपको उसमें कनेक्ट करके दे सकता हूँ। तो इस तरह से कहने का मतलब, there is a saying in English that there is always light at the end of the tunnel. The meaning is कि there is always light at the end of the tunnel, यानी हर एक टनल में से हम लोग जब गुजरते हैं तो अंधेरा तो होता है, लेकिन टनल के एंड में जब जाते हैं तो जरूर हमें उजाला दिखता है। तो हमें पॉजिटिव वे से इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया और इसको सक्सेसफुली हम लोग उस तरह से हम लोग कर पाए। तो आप भी कोशिश कीजिए। आपको अगर कुछ भी अगर ये यू कैन राइट टू मी, यू कैन कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, आई विल बी sharing my details and everything. So you can call me, contact me anytime. I will, be happy to share with you. I will also share with you Chirag's number. You can call up Chirag, tell him my name, not an issue. You can tell him that Mr. Javlekar has given your name and he has told on behalf of you कि आपको वो हेल्प करेगा। तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा आपले प्रश्न, आपले विज्ञान करने के लिए, यानी इंटर्नशिप में। 765. So this is, you can contact Chirag Marathe from IIT Bombay, especially if you are from rural areas. He will help you out in conducting the session, online sessions. He can come down also. इस तरह से आप लोग कर सकते हो। So as I said, there is always a way out that you can, there are always solutions which are there. Nevertheless, this situation will be challenging initially, but in days to come, as we improve, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू डेवलप द कॉम्पिटेंस। तो हम लोग बारी 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 continuously when we start work on it, work on it, work on it, so definitely you develop your competence and your skills, and that is how you can make it more effective. So thank you very much. Any questions? We are open to the question and answer session now. Thank you very much. Thank you, Dr. Rafi and his team, the center, UGC center. Thank you for this opportunity. It was very good. Actually, from our routine work, we take this such kind of breaks to deliver sessions. So definitely, it also brushes up our own, knowledge. Any questions? The house is open now for the question and answers. You all will implement, because the real thank you will come when you start implementing whatever you have tried to, and you will face difficulties. आपको चैलेंज होंगे, you call us, we'll help you out. Any questions?
So should we end the session then? Sure, good. The coordinator is there. Any coordinator is there? I'll just call up Mr. Rafi. इथं सांगू इच्छितो एक थोडस अजून एक हॅलो या सो अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो मी इथे I will also share with you. We have also, for the ease of, for the benefit of the students, we have also made one internship stipend policy. From the university side, we are also, giving some stipend to the students also, like, free hostel facility दिले आम्ही त्यांना. आणि मुलांना काय खेड्यापाड्यातली मुलं असतात मग हॉस्टेलवर राहायसाठी आम्ही त्यांना फ्री फॅसिलिटी दिली आणि वरतून ₹1000 साधारण एक इंटर्नशिपचं मानधन म्हणून बिकॉज बरेच मुलं विचारतात की इंटर्नशिप मध्ये स्टायपंड मुलांना प्लीज सांगा की स्टायपंड पेक्षा जास्ती महत्वाचं आपल्याला लर्निंग आहे व्हॉट लर्निंग इज इम्पॉर्टंट बिकॉज सी स्टायपंड इज अ सेकंडरी थिंग व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज द learning opportunity. Let me check if the student policy is there. Sure. Right, I think we made one policy also for the students. Hostel आणि त्यांना काही stipend पण आम्ही दिलं होतं. That was just I wanted to mention. So if you're done, I will end the session now. If there are no questions. Okay. Thank you all of you.
सर 2 मिनिटांमध्ये सर जॉईन होत आहे. त्याच्यानंतर आपण व्हॅलिडेटरी सेशनला सुरुवात करूया. ओके ओके ओके. आमचं तर किती वेळ आहे अजून? Yes, sir. We can start now validatory, immediately. ओके ओके ओके. थँक्यू थँक्यू. So, first of all, I would like to thank Dr. Rajesh Jawlekar, sir, for sparing his valuable time in this last session. So, just before concluding, this was the last day of this NEP orientation and sensitization course. So, we will have a validatory session of Dr. Rajesh Jawlekar, sir, through Rajesh Jawlekar, sir. So, I would now request Amol to play the university song in the banner. गीत आमुचे आकाशाचे, गीत आमुचे सागराचे, इतिहासाचे जनावनाचे, गीत आमुचे जागराचे, गीत आमुचे आकाशाचे, गीत आमुचे सागराचे, इतिहासाचे जनावनाचे, गीत आमुचे जागराचे. अभंगाचे ओवीचेही माय बोलीचे माहेर, वाऱ्यातही मराठीचे दिवे लख घरोघर. संत महंतांचे विरागी, गीत आमुचे वादळाचे, इतिहासाचे जनावराचे, गीत आमुचे जागराचे. तंतु तंतु संघर्षाचा पैठणीत भिनलेला, नक्षीतच पक्षी पक्षी विजयाचा विरलेला. सोन पहाट उदयाचे, गीत आमुचे उजेडाचे, इतिहासाचे जनावराचे,
घटनेचा सूर्य नवा शब्द शब्द उजळून गेला समतेचा संग्राचा अर्थ ढाळून गेला विराट विशाल संस्कृतीचे गीत आमुचे जीवनाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे Thank you. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome all the faculty members. I also welcome today's chief guest, Professor Dr. Rajesh Jawlekar sir, and all the entire participants, those who have joined this NEP orientation and sensitization course. So, before going to the official valedictory function, I would request all the participants to open their cameras. सभी participant camera open करें. Thank you. So, not taking much time, I would request our chief guest, Professor Dr. Rajesh Jawlekar sir, to deliver a valedictory address to all of us. Over to you, sir. Rajesh ji, unmute yourself. Yes, you can unmute now, sir. I have given you the permission. Yes, sir. Thank you. So, yeah, Dr. Rafi, at the outset, let me thank you and your team first for giving me this opportunity. And I actually, the participants who have interacted in today's session. So, friends, you must have seen that, whatever this exercise is happening, even by the central government initiatives or the universities which are taking the initiatives for FDP, such kind of FDP programs. So I think it is our moral responsibility of all of us to participate wholeheartedly in such kind of initiatives, understand the essence of it. See, there will be a lot of sessions which will be done. I have been seeing this for the last, I think, more than Rafi sir, it has been more than 10 years, I think. Yes, yes, sir. Yes.
Because we have been associated. That time I was Yes. in industry. Yes. In fact, now I am in academics. तो क्या होता है कि we all need to give back to the society something, you know. So I think it's as our profession is very sacred. In fact, whatever I am today, probably, ठीक है, my parents also play an important role, but I would say that maybe 50% to our parents and friends, and 50% or perhaps more than that will go to my teachers. Correct? So it's a noble profession, and I need not speak in front of you because you are stalwarts in your own areas. You are experts in your own area. I would just say that enjoy such kind of programs, learn from it, and let's take forward the process because nobody can, alone things cannot work in isolation. We all need to work in synergy. जैसा मैंने आपके साथ अभी शेयर किया कि आई शेयर्ड विथ यू ऑल माय ड्राफ्ट्स आई शेयर्ड विथ यू ऑल माय कम्युनिकेशन and I requested you कि भाई give me feedback so that I can improve because if anything is missing probably 1 or 10 2 4 brains were working. Now when I see with such kind of opportunity there will be 50 brains which are working. So definitely such kind of interactive programs help to take forward the process. And let's begin with the journey. This is Rafi sir, with your kind permission, I would say this is not end of the program. This is the beginning of the year. Because whatever we have learned, let's start implement best practices and let's exchange that also, like through such forums. So I would not take much of time again because it's already towards the end of the program. I would once again thank, every time I interact with in such programs, it's a wonderful experience. It gives us a self-satisfaction and a good learning for all of us also. It's a mutual learning. So thank you very much, Rafi sir and team, for this, your director of UGC Center and the entire team of UGC Center. Thank you very much for this opportunity. And we look forward to meeting you again, maybe in some other workshops. If anybody happens to come to Jalgaon, please come. You're welcome. And I've also shared my credentials. Let's be in touch. I'll be happy to help all of you. Thank you very much and wish you all the best. Thank you, sir. Thank you for sparing your valuable time. Indeed, sir, post-COVID, when we are talking about these online courses and the response we are getting for the online courses is very high, but whatever output we get from these online courses, still it is a question mark in front of us, and we should utilize it as an opportunity whenever it is required. Because you see that adding to your point that when government is spending lakhs of rupees on these online courses, it should be a fruitful one. I hope that these courses are fruitful and all the participants are taking in something in their bags. So it is really a good suggestion from your side, sir. So with the permission of Rajesh Jawlekar, sir, I declare that this valedictory function is over. And before ending this valedictory function, I would request Amol Madan to start the national anthem, and I would request all the participants, सभी सहभागी मित्र जो है हमारे, राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहे. सभी लोग राष्ट्रगीत के लिए खड़े रहे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Now I would request, with the permission of this chair, I now declare that this valedictory function is over. Yes.